गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना एक इनॉर्मस टेलीस्कोप लगा रहा है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, जो कि घोस्ट पार्टिकल्स को डिटेक्ट करेगा। अब ये घोस्ट पार्टिकल्स क्या है? न्यूट्रिनोस। ठीक है, तो चाइना जो है वो ट्राइडेंट नाम का टेलीस्कोप लगा रहा है साउथ चाइना सी में, जो कि 10,000 टाइम्स मोर सेंसिटिव होगा दैन एग्जिस्टिंग अंडर वाटर टेलीस्कोप्स। तो ये न्यूट्रिनोस क्या होते हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं। तो ये साइंटिस्ट जो हैं वो ये देखते आ रहे हैं कि एटम्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल थे, लेकिन उसके बाद उन्हें पता लगा कि जो है एटम्स जो हैं वो इवन सब एटॉमिक पार्टिकल्स से भी जो है बने हैं, जैसे कि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह सिमिलर हैं, लेकिन इनमें कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता और इनका मास भी स्मॉल होता है। ठीक है, कई बार वो ज़ीरो भी हो सकता है। न्यूट्रिनोज जो हैं वो मासलेस होते हैं। ठीक है, और न्यूट्रिनोज जो हैं वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट पार्टिकल्स हैं हमारे पूरे यूनिवर्स में। जब भी कभी कोई एटॉमिक न्यूक्लियाई जो है वो इकट्ठा होता है या फिर ब्रेक अपार्ट होता है, तो उससे न्यूट्रिनोज बनते हैं। न्यूट्रिनोज जो है उनका वीक चार्ज होने की वजह से उनका ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट मास भी होता है, और इसीलिए उनको जो है साइंटिस्ट को डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, वो इतना रेयर होता है उनको डिटेक्ट करना कि वो ऑलमोस्ट हम इम्पॉसिबल ही मानते हैं कि वो डिटेक्ट हो पाएंगे। इसीलिए इनको हम घोस्ट पार्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो है वो इनको कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो कई बार ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, इसीलिए चाइना जो है वो घोस्ट मॉलिक्यूल टेलीस्कोप अंडर वाटर बना रहा है। अब जो लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप है वर्ल्ड में, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन विस्कॉन्सिन का आइस क्यूब टेलीस्कोप, जो कि अंटार्कटिका में डीप सिचुएटेड है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि घोस्ट पार्टिकल्स को डिटेक्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स साइंटिस्ट को अभी तक ये नहीं पता है कि जो ये मैसिवली अबंडेंट न्यूट्रिनोज हैं ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि ये फिजिक्स के रूल्स को डिफाई कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट जो हैं वो ये देखते हैं कि अर्ली यूनिवर्स के बनने में खासकर बिग बैंग इवेंट के बाद न्यूट्रिनोस का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसलिए अगर हम न्यूट्रिनोस के बारे में पता लगा पाएंगे तो हम ये पता लगा सकेंगे कि यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ है। अब इंडिया भी इसमें पीछे नहीं है। इंडिया भी जो है इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी 2015 में अप्रूव कर चुका है, जो कि 1200 मीटर का डीप केव में जो है ये ऑब्जर्वेटरी बनी है, और ये कॉस्मिक रेज को आइसोलेट करेगी बाकी के सोर्सेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन से। और मोटिव इसका ये है कि एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोस को जो कि कॉस्मिक रेज के इंटरेक्शन से बन रहे हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, उनको स्टडी करना। ठीक है, अब इसमें 7 और प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस और 13 पार्टिसिपेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जॉइंटली फंडेड एक प्रोग्राम है। इसकी लोकेशन जो है वो ऐसी रखी गई है कि इसको माउंटेन्स के जो है बीच में रखा गया है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू बाकी के जो पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रिनोज जो हैं वो माउंटेन्स को भी पास थ्रू कर जाते हैं। ओके, और वो डिटेक्टर के पास पहुंच जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2020। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो FSSAI जो है उन्होंने कहा है कि QR कोड जो है फूड प्रोडक्ट्स पर होने चाहिए, ताकि विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल जो हैं वो एक्सेसिबली देख सकें जो फूड प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अब रिसेंट एडवाइजरी दी है जिसमें कहा है कि इंक्लूसिव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो है एक फंडामेंटल राइट है सिटीजन्स का, तो एम्पावर करना कंज्यूमर्स को ज़रूरी है। इसीलिए जो है लेबल पे जो है वो ये QR कोड होना ज़रूरी है, ताकि जो है इवन विजुअली इम्पेयर्ड जो कंज्यूमर्स हैं वो भी डिटेल्स देख पाएँ प्रोडक्ट की। ओके, तो FSSAI क्या है? एक स्टेचुटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। साल 2008 में इसको बनाया गया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंडर, और ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए पब्लिक हेल्थ को थ्रू रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी। और जो ये 2020 के रेगुलेशंस हैं, ये कई तरह के जो गैप्स थे रेगुलेशंस 2011 के, उनको एड्रेस करने के लिए लाया गया था, जैसे कि मैंडेटरी डिक्लेरेशन करना कि कोई एलर्जन इन्फॉर्मेशन, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस जो है वो न्यूट्रिएंट्स के साथ मेंशन करना, एक्सपायरी डेट, न्यू लोगो और सिंबल्स देना नॉन वेज और वेज फूड आइटम्स के। ठीक है, फिर ये न्यू रेगुलेशंस हैं, ये इवन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और रेस्टोरेंट ऑपरेटर्स के ऊपर भी जो है वो अप्लाई कर दिए गए हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ओस्टियोपोरोसिस। तो ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड ओस्टियोपोरोसिस डे 2023 जो है रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है अवेयरनेस जनरेट करने के लिए।
डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ ओस्टियोपोरोसिस के लिए। ठीक है, तो ओस्टियोपोरोसिस जो है ये एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसमें बोन्स वीक होने लग जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं और बहुत ही जो है वो लाइकली हो जाती हैं ब्रेक होने को। ठीक है, तो ये धीरे धीरे डेवलप होती है कंडीशन, और ये जनरली जब कोई बोन फ्रैक्चर होती है तभी जाकर पता लगता है कि ये ओस्टियोपोरोसिस की वजह से हुई है। ओस्टियोपोरोसिस जो है बहुत ही कॉमन हो जाता है जब आप की एज बढ़ने लगती है। बोन्स अपनी एबिलिटी टू रीग्रो जो है वो खोने लगती हैं। बॉडी ज़्यादा बोन टिश्यू को एब्जॉर्ब करती है दैन इट प्रोड्यूसेस। ठीक है, इसकी वजह से जो है बोन डेंसिटी कम होने लगती है। कई तरह के फैक्टर्स जो हैं वो देखे गए हैं कि क्यों ये डेवलप होता है ओस्टियोपोरोसिस। जैसे समझ लो आपने कई बार कोई हाई डोज स्टेरॉयड टैबलेट्स ली हैं, या कुछ फैमिली हिस्ट्री है आपकी फैमिली में कि ये ओस्टियोपोरोसिस डेवलप होता है। हैवी ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करते हो, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। सिम्टम्स तो इसमें जो है अर्ली स्टेज में तो कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, और धीरे धीरे जो है सिम्टम्स आपके डेवलप होने लगते हैं जब आपको बैक पेन होने लगती है, लॉस ऑफ हाइट ओवर टाइम, आपका पोस्चर जो है वो स्टूप होने लगता है, फिर बोन बहुत आसानी से टूटने लगती हैं। ठीक है, तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से जो है आप इसको ठीक कर सकते हो। कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर सकते हो, और मेडिसिन जिससे कि बोन्स को स्ट्रेंथन किया जा सके उससे भी आपको हेल्प मिल सकता है। अब वर्ल्ड ओस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, और इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ओस्टियोपोरोसिस के ऊपर ये ध्यान देना चाहता है। और ऑफ कोर्स इंटरनेशनल ओस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करती है 1998 से। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली रूल किया है कि आईबी जो है वो आरटीआई एक्ट के प्रोविजन से जो है वो एग्जेम्प्टेड है। आईबी क्या है? इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया, जो कि इंटेलिजेंस गैदर करती है फ्रॉम विद इन इंडिया, और इवन काउंटर इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म टास्क भी ऑपरेट करती है। इंटेलिजेंस कलेक्शन बॉर्डर एरियाज़ में जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आईबी के पास है। 1951 में हिम्मत सिंह जी कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद ये काम इनको दिया गया था। अब ये होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आती है, हाईली कॉन्फिडेंशियल होती है इनकी एक्टिविटीज़, और ये इंटेलिजेंस जो इन्फॉर्मेशन है अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज और इवन पुलिस को भी देती है। और बेसिक सेफ्टी क्लियरेंसेस जो होती है इंडियन डिप्लोमेट्स के, जजेस को उनके नेशनल ओथ से पहले, वो भी फंक्शन आईबी के पास होता है। ठीक है, इनके पास ये पावर होती है कि किसी की भी जो है फ़ोन को वायर टैप कर सकते हैं विदाउट अ वारंट। और जो डायरेक्टर जनरल होते हैं इसके, जिनको हम डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं, डीआईबी, वो हमेशा एक आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं उम्मीद स्कीम। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसने रिसेंटली एक फ्लावर नर्सरी लॉन्च की है उम्मीद स्कीम का बेनिफिट लेते हुए इन बडगाम, जम्मू कश्मीर। तो उम्मीद स्कीम जो है जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन की एक स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें कि विमेन को सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए इनकरेज किया जा रहा है। मेन ऑब्जेक्टिव है स्कीम का रूरल पुअर को जो है हेल्प करना अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, और विमेन को स्मॉल सेविंग्स के लिए इनकरेज करना थ्रू देयर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और वो उनको रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है वो हेल्प भी प्रोवाइड करवाना। ठीक है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को जो है ये हेल्प करता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकें, और ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रूरल लाइवलीहुड सोसाइटी द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड्स मिशन जो है एक पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है, जो कि विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस रख रहा है। सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स ऑफ विमेन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, इनके ऊपर इसका फोकस है। पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए मिशन चलाया जा रहा है ग्रास रूट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, और ये एनआरएलएम के अंडर ही आता है ऑफ कोर्स, और इसको जे&के में उम्मीद स्कीम के नाम से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, रूरल वुमेन को कई तरह के प्लेटफॉर्म्स दिए जा रहे हैं, ब्लॉक लेवल पर उनकी हेल्प की जा रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बेडोंग अरब्स। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक पॉपुलर वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही है जिसमें कि लोकल इजराइलीज़ अपनी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं बेडोंग कमांडर को, क्योंकि उन्होंने हमास फाइटर्स के अगेंस्ट इफेक्टिव डिफेंस दिखाया था। तो ये बेडोंग अरब्स कौन हैं? तो ये बेडोंग जो है ये नोमैडिक मुस्लिम अरब पीपल हैं जो कि नेगेव डेजर्ट्स ऑफ सदर्न इसराइल में जो है मेनली वहाँ पर रहते हैं। ये ट्रेडिशनली पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी थी जिनका कोई पावरफुल या एक्सक्लूसिव नेशनल एफिलिएशन नहीं था। कभी ये सऊदी अरेबिया की साइड पर रहते थे, कभी ये सिनाई पेनिनसुला की साइड पर रहते थे। ये जो बेडोंग पॉपुलेशन है
इसराइल में करंटली 2,10,000 के आसपास है, और इनकी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है नेगेव डेजर्ट ऑफ साउथ में। ठीक है। अब ये कई पिछले डेकेड से ओटोमन रूल के अंडर थे, और लेकिन ये जो है एक तरह से इन्होंने सेडेंट्री लाइफ भी शुरू कर दी थी उसके बाद। अरब इसराइल वॉर के टाइम पर 1948-49 में ये इन्होंने जो है वैल्यूएबल इंटेलिजेंस दिया जूइश मिलिशियाज को और आईडीएफ को, इसराइली डिफेंस फोर्सेस को, जिसकी वजह से जो है अरब आर्मीज़ के अगेंस्ट जीतने में इसराइल को हेल्प हुआ। इसराइल ने इसीलिए 1950s में इनको जो है लार्ज नंबर ऑफ बेडोन्स को एज सिटीजन्स रिकग्नाइज किया और इनको जो है नेगेव में, डेजर्ट के पास वाले एरिया में सेटल कर दिया था। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जो है ओईसीडी ने रिलीज़ किया है, जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट माइग्रेशन फ्लोज देखे गए हैं ओईसीडी कंट्रीज़ की तरफ 2021 और 2022 में। इनफ्लोज ऑफ रिफ्यूजीज़ भी जो हैं वो हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया था। अब ये ओईसीडी क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है 38 कंट्रीज़ की, जो कि डेमोक्रेसी और मार्केट इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। टिपिकली डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ही इसके मेंबर्स हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़, और 1960 में इसको बनाया गया था। ओईसीडी का गोल है पॉलिसीज़ को ऐसी फॉस्टर करना जो कि प्रॉस्पेरिटी, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी और वेलबींग फॉर ऑल को शेप करे। और ये एक सो कॉल्ड ब्लैक लिस्ट ऑफ नेशंस भी मेंटेन करती है, जिसमें कि जो अनकॉपरेटिव टैक्स हेवंस हैं उनको मेंशन किया जाता है। ठीक है। हेडक्वार्टर्स इसका पेरिस में है, मतलब फ्रांस में है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कस्तूरी कॉटन भारत। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल जो हैं उन्होंने यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, कॉमर्स इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है उन्होंने कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट को लॉन्च किया है, जो कि एक जॉइंट इनिशिएटिव है इन सब मिनिस्ट्रीज़ का, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, ताकि सेल्फ रेगुलेशन लाई जा सके इंडियन ब्रांड ऑफ कॉटन, जिसको हम कस्तूरी कॉटन ब्रांड कहते हैं। ठीक है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स देगा आपके जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड पे। अब इसको कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसको टेक्सप्रोसिल कहते हैं, वो प्रॉपरली जो है इसको इम्प्लीमेंट करेगा और कस्तूरी कॉटन इंडिया ब्रांड को प्रमोट करने में हेल्प करेगा। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is world's largest ghost particle detector. This topic is important for your science and tech section. So China is building an enormous telescope in the Western Pacific Ocean, and this telescope would be able to detect ghost particles, which are also known as neutrinos. And China is saying that this new telescope called Trident will be situated in South China Sea. And this, as per the experts, this telescope would be able to uh, would be able to detect more neutrinos, because it will be 10,000 times more sensitive than existing underwater telescopes. So what are these neutrinos? So for a long time scientists thought that atoms were the smallest particles, but later on it was realized that atoms themselves are comprised of even tinier subatomic particles known as protons, electrons and neutrons. So neutrons are basically subatomic particles which are very similar to an electron, but they are having no electrical charge, and they are very small. They have a very small mass, which might even be zero. Okay, so neutrinos are the most abundant particles in the universe, and every time atomic nuclei come together, like in the sun, or even when they break apart, like in a nuclear reactor, this phenomena leads to production of neutrinos. Neutrino is a ghost particle. Why? Because neutrinos' weak charge and almost non-existing mass makes them very difficult for scientists to observe. This rarity of interactions between with other particles by neutrinos makes them almost impossible to track. That's why they are called as ghost particles. So how do scientists detect these ghost particles? Sometimes they interact with water molecules. That's why China is also building the ghost molecule telescope underwater. Right now, the largest neutrino detecting telescope is made by the University of Madison, Wisconsin's Ice Cube Telescope, and it is situated deep in the Antarctic region. Okay. So why does this detection of ghost particles matter? Because we do not really know about the massively abundant neutrinos and how they act. So because they defy established rules of physics, scientists think that they might have played a role in the early universe also, right after the Big Bang, the Big Bang
process. So that's why there is evidence that once we realize the way neutrinos work, we would be able to understand the origins of our universe also. So India is not also behind in this research. We also have this Indian Neutrino Observatory project approved in 2015, and it aims to study neutrinos in a 1200-meter deep cave, and it has been built underground to isolate neutrinos from other cosmic rays, and to and any other from any other sources of background radiation. So the first phase would be able to study the so-called atmospheric neutrinos produced by interactions of cosmic rays in the Earth's atmosphere. And there are several institutions involved in this project, 7 primary and 30 participatory research institutes. But this project is being jointly funded by DAE and DST. Okay, and to avoid difficulty of identifying and separating signals produced by neutrinos, the project has been kept inside a mountain, because neutrinos will easily pass through the mountain, whereas to reach the detector, whereas other particles will be filtered out through the mountain rock. So the next topic is Food Safety and Standards Regulation 2020. This topic is important for your governance section. So FSSAI has recommended the inclusion of QR codes on food products for accessibility by visually impaired individuals, and this guideline has been issued under the Food Safety and Standards Regulations of 2020. So, in the recent advisory, FSSAI has noted that ensuring inclusive access to information is a fundamental right of citizens, and this information is aimed at empowering consumers so that they can make informed choices while selecting the food products. So, it is imperative that food products are labeled in a manner which ensure accessibility of safe food for to all consumers, including those with visual impairments. And one effective means to achieve this is by incorporating QR codes on product labels. Okay, so QR codes would encompass comprehensive details about the product like ingredients, nutritional information, allergens, manufacturing date, etc. Okay, so what is FSSAI? This is a statutory body under the Ministry of Health and Family Welfare, and it was established in 2008 under the Food Safety and Standards Act of 2006, and it is responsible for protecting and promoting public health through the regulation and supervision of food safety. So what is FSSAI regulations of 2020? So these regulations basically aim to replace the 2011 ones, and these new regulations come with a host of new requirements like mandatory declaration of allergen information, expiry date, recommended dietary allowances, a new logo and symbols for non-veg and food items. So under these new regulations, even e-commerce platforms and restaurant operators are have to comply with these regulations. So the next topic is osteoporosis. This topic is important for your social issues. So World Osteoporosis Day 2023 was recently celebrated to promote awareness regarding the prevention, diagnosis and treatment of osteoporosis. So this osteoporosis is a health condition which weakens bones, making them fragile and more likely to break. So it does not develop overnight, but it gets developed over several years, and it often gets um, diagnosed only when a fall or a sudden impact causes a bone to fracture. Okay, so osteoporosis happens when you get older and the bones lose their ability to regrow and reform themselves. And osteoporosis happens because the body starts reabsorbing more bone tissue and produces less to replace it, thereby lowering bone density. There are several factors which can increase the risk of developing osteoporosis, like taking high dose steroid tablets for a very long time, other medical conditions, family history of osteoporosis, long term use of certain medicines, heavy drinking and smoking. Okay, generally, the symptoms do not appear in early stages of bone loss, but once your bones have weakened due to osteoporosis, you might have signs and symptoms like back pain, loss of height, a stooped posture, a bone which breaks more easily than expected. Okay, so what is the treatment? So making lifestyle changes like changing your diet and exercise routine, taking calcium and vitamin D supplements, using medicines to strengthen bones would be effective. What is World Osteoporosis Day? It is observed annually on 20th of October. This day is marked to promote and highlight the importance of early diagnosis of osteoporosis, its treatment and preventive tips, and it is organized by the International Osteoporosis Foundation. Okay,
So the next topic is Intelligence Bureau. This topic is important for your governance section. So Delhi High Court has recently ruled that IB stands exempted from the RTI Act. So IB is an internal intelligence agency of India, which is used to gather intelligence from within India and also to execute counterintelligence and counter-terrorism tasks. So IB is particularly tasked with intelligence collection in border areas following the 1951 recommendations of Himmat Singh Ji Committee. Okay, so it comes under the administrative control of Home Ministry, and its activities are highly confidential. It passes on intelligence from other. Uh, it passes off on. It passes on intelligence information to other intelligence agencies also, as well as the police. It is responsible for granting basic safety clearance to Indian diplomats and judges before their oath. It also carries out wiretapping without a warrant, and the director of Intelligence Bureau has always been an IPS officer despite the employees from other law enforcement agencies serving under the IB. So the next topic is Umeed scheme. This topic is important for your economy section. So a self-help group has recently launched a flower nursery as part of the Umeed scheme in Badgam. So Badgam is of course in Jammu Kashmir. This Umeed scheme is under the Jammu and Kashmir Rural Livelihoods Mission, and it's a centrally sponsored scheme to encourage women to be self-dependent and self-sufficient. The main objective of the scheme is to help the rural poor across Jammu and Kashmir and to encourage women to make small savings so that their self-help groups become bankable at a reduced rate of interest. It also helps women entrepreneurs to market their products. It is implemented by the Jammu and Kashmir State Rural Livelihood Society. So, what is Jammu and Kashmir Rural Livelihoods Mission? It's a poverty alleviation program focusing on women empowerment through sustainable institutional platforms of women, financial inclusion, and sustainable livelihoods. It aims to reduce poverty by building strong grassroots institutions. It is under the national flagship program of National Rural Livelihoods Mission, and it is being implemented in J&K as the Ummeed scheme. So it provides rural women with various platforms like self-help groups, village organization at the block level to help them in gaining sustainable livelihoods. So the next topic is Bidong Arabs. This topic is important for your international relations. So a popular video on social media is showing local Israelis expressing their gratitude to a Bidong commander for putting up effective defense against Hamas fighters. So these Bidong Arabs are nomadic uh, Muslim Arab people who live mainly in Negev desert of southern Israel. They have traditionally been pastoralists with no powerful or exclusive national affiliations. They were living a century and a half ago with Saudi Arabia and then later on with Sinai Peninsula with their livestock. But the Bidong population in Israel currently stands at about 210,000 individuals with a significant presence in the Negev desert of the south region of this country. In the last several decades of Ottoman rule, these Bedouins have begun to settle into a large sedentary life. During the Arab-Israeli War of 1948 and 1949, they provided valuable intelligence to the Jewish militias and also the Israeli defense forces, and some of them even fought against the Arab armies alongside the Jews. That's why in 1950s, Israelis recognized a large number of Bedouins as their citizens and subsequently helped them build settlements for them in the Negev desert. Okay. So the next topic is International Migration Outlook 2023. This topic is important for your social issues. So recently, International Migration Outlook was released by OECD. So as per the findings of this report, India saw the highest migration flows to the OECD countries in 2021 and 2022, but inflows of refugees from Ukraine has reached the highest level on record. Okay, so what is OECD? It's an international organization of 38 countries which are committed to democracy and the market economy. Its members are typically democratic countries which support free market economies, and their goal is to shape policies which foster prosperity, equality, opportunity, and well being for all. It also maintains a so called blacklist of nations which are considered uncooperative tax havens. So, its headquarters is located in Paris, that is in France. So the next topic is Kasturi Cotton Bharat. This topic is important for your economy section. So recently, Union Minister of Textile, Commerce and Industry, Consumer Affairs, and Food and Public Distribution have launched their website of Kasturi Cotton Bharat. So this is a joint initiative by Ministry of Textiles and the Cotton Corporation of India. So the aim is to work on the principle of self-regulation with respect to the cotton Kasturi Cotton brand, which is the brand of cotton
exported from India. So this website provides a digital platform for necessary information and updates on the initiatives and highlights of the registration process for the ginners to produce Kasturi Cotton brand, Bharat brand. And this will have a QR based certification technology which will be used at each stage of the processing, and a blockchain based software platform will provide the necessary information for the QR for the Kasturi Cotton Bharat certificate. Okay, so the Cotton Textiles Export Promotion Council, TexProcel, is the apex body which will be implementing the Kasturi Cotton India branding and certification. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.